Testers, how are you? Okay, so in this session, we'll be talking about headless browser. The word is headless browser. मतलब जब भी हम कोई भी Selenium स्क्रिप्ट को रन करते हैं तो Selenium पर्टिकुलर ब्राउजर लॉन्च करता है, ओपन करता है, राइट? दैट इज अ क्रोम. हमने लिखा वेब ड्राइवर ड्राइवर इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर, तो क्रोम ब्राउजर को ओपन करेगा. अगर हमने लिखा वेब ड्राइवर ड्राइवर इक्वल टू न्यू एज ड्राइवर, तो एज ड्राइवर को ओपन करेगा. सेम वे फायरफॉक्स, तो फायरफॉक्स ड्राइवर ओपन करेगा. राइट नाउ headless browser is what? Headless browser ये है कि you cannot see the browser. All the process will be performed by WebDriver, but you cannot see the browser. आपको browser नहीं दिखेगा, and that is called headless browser. So you can see the definition. A headless browser is a web browser that runs without a GUI. Okay, GUI, you cannot see the graphical user interface, and it will perform. It does everything a normal browser does, except it will not show you the UI. Okay, UI आपको नहीं दिखेगा, बाकी everything is there. So the benefit is that it is much faster, and it is ideal for automation, because हम automation में, let's say in your project, if you have created more than 200, 300 automation scripts, और हर एक automation script के लिए browser open हो रहा है, So if you want to avoid that part, you can use headless browser. तो headless browser इसीलिए हम लोग use करते हैं. So ये उसका purpose है, automate web tasks like testing the websites. हम लोग उसको फास्टर यूज करने के लिए यूज करते हैं, बिकॉज यूआई आपको दिखेगा नहीं, यूआई दिखेगा नहीं तो ऑटोमेटिकली योर टेस्ट विल एग्जीक्यूट फास्टर देन नॉर्मल एग्जीक्यूशन. एंड उसका एक्चुअल यूज हम जेनकिंस में करते हैं, CI/CD पाइपलाइन. बिकॉज जेनकिंस में हम जब कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो अगर आपने MSI इंस्टॉलर से अगर जेनकिंस को इंस्टॉल किया है, तो वैसे भी वो ओपन नहीं करता, वो हेडलेस मोड में ही चलता है. देयर आर आपको, इफ यू हैव यूज्ड जेनकिंस, तो जेनकिंस में एक होता है जिसको हम WAR फाइल को ओपन करके स्क्रिप्ट को रन कराते हैं. So that will launch the browser. Jenkins will launch the browser and Jenkins will perform some activity. And second part is that there is a MSI installer जो आप इंस्टॉल करते हो विंडोज में, वो बाय डिफॉल्ट पे हेडलेस में ही चलता है, आप उसको देख नहीं पाओगे ब्राउजर को. परफेक्ट. सो इफ यू आर यूजिंग वॉर एग्जीक्यूशन, WAR एग्जीक्यूशन, एंड वो ब्राउजर ओपन करता है, लेकिन आपको ब्राउजर जेनकिंस में ओपन ना कराना हो, तो आप हेडलेस यूज कर सकते हो. और इवन इफ यू आर नॉट यूजिंग जेनकिंस, आपको नॉर्मल स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन भी करना है, तो आप हेडलेस का यूज कर सकते हो. तो कैसे वर्क करता है? इट एग्जीक्यूट्स JS, जावास्क्रिप्ट, it processes HTML, CSS, and it interacts with the different page DOM. That is document object model. तो वेब पेज की जो HTML स्ट्रक्चर होता है, वो उसको इंटरेक्ट करता है, CSS को प्रोसेस करता है, HTML को प्रोसेस करता है. So it performs, it supports normal operations like clicking on button, if you want to type anything in the text box, if you want to select something from the drop down box, if you want to capture the screenshot, that will be done automatically. Perfect. So जो popular headless browsers है, that is, one is Chrome, second is Chromium, Firefox, Playwright. तो ये अलग अलग पॉपुलर हेडलेस ब्राउजर हम यूज करते हैं. चलो एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं, so that you will get some idea about it. So I'm creating one script, one basic script. सिंपल टेस्ट परफॉर्म करके देखते हैं, तो अपने को आइडिया आएगा कि कैसे एग्जैक्टली वर्क करता है. So I'm giving the title as headless browser. Perfect. Let's use the test ng over here. So I'm creating public void, let's say setup, public void test headless browser. All right. Before test. All right. So I'll simply import it. Before test, before class, you can use any annotation. Web driver, driver. Okay. So here I'm launching the Chrome browser. मैं Chrome browser को पहले launch करूंगा, and
All right, perfect. And we'll load the URL. Let's say, let's take any of the URL. कोई एक URL ले लेते हैं. Where I'm taking selenium.dev. Okay, this is the official website of Selenium. And let's bring the title of this URL. Title of the web page. Get title. All right. So let's run this and we'll see that it will launch the browser and it will print the title of the web page. ये normal हम execute करते हैं the same script that I have written. Okay. So it has launched the browser and the web title is Selenium. Okay. So it has printed Selenium. Okay. That is a web title. So we can see that web title is what? Selenium, right? Now, if I want to run the same code in a headless mode, so एक छोटे से मतलब छोटा step perform करना है आपको. You have to write 2 lines of code, and that 2 lines is you have to create like object of Chrome options class. Chrome options is equal to new Chrome options. So Chrome options करके class है जिसका object आपको create करना है. Perfect. Now that Chrome options class की एक method है that is add arguments. और add arguments में आपको पास करना है dash headless. That's it. You have to pass this argument dash headless, right? And this options will be the constructor value of this class. तो Chrome driver का जो constructor है उसमें हम लोग options को पास करेंगे. तो ये 2 लाइन आपको लिखनी है if you want to execute your script in a headless mode of the browser. Okay, now if I run this test, you can see that it will not launch the browser. वो browser open नहीं करेगा. See that browser open नहीं हुआ है, and you can see that उसने message print कर दिया title of the web page is Selenium. Done. So this is called headless mode. तो अगर आपने कोई भी automation script बनाई है, you don't need to change the code. आपको सिर्फ 2 लाइन आगे ऐड करनी है. दैट इज क्रोम ऑप्शंस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है और उसके एक मेथड है ऐड आर्गुमेंट, उसमें आपको हेडलेस पास करना है एंड दैट विल बी द कंस्ट्रक्टर ऑफ दिस क्रोम ड्राइवर क्लास का ऑब्जेक्ट. परफेक्ट. ये 3 स्टेप आपको परफॉर्म करने हैं एंड द प्रोग्राम विल एग्जीक्यूट इन अ हेडलेस. राइट. सो दैट्स इट. थैंक यू सो मच.